डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट। आज के वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज। हम जानते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देयरफॉर वी कैन से option C, difference between export and import of goods, is the correct answer. Next question, that is trade deficit occurs when the value of trade balance of trade is equal to x minus m, that is value of exports minus value of imports. जब value of exports कम होगा as compared to the value of imports, then we have trade deficit. That means export of goods is less than the import of goods. Next question, that is import and export of goods is known as, उसको हम क्या कहते हैं, that is known as visible trade, या उसको हम balance of trade भी कह सकते हैं. Next question, that is import and export of services is known as, उसको हम invisible trade कहते हैं. Next question, that is balance of payment is an accounting system that records monetary transactions between, इसका जो correct answer है that is residents of a nation and the rest of the world. Next question, that is when we compare BoP with and balance of trade, we understand that both balance of trade is the subset of balance of payment. Next question, that is balance of payment uses the system of accounting, that is double entry bookkeeping system. हम जानते हैं कि there are two items in the balance of payment, one is credit side and another is debt side. Therefore option B, double entry, is the correct answer. Next question, that is balance of payment is a dash concept as compared to balance of trade. हम जानते हैं कि ये जो balance of payment है it is a broader concept as compared to balance of trade, because balance of trade is a subset of balance of payment, or we can say it is a small component of balance of पेमेंट. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट न जाए. द रेसिडेंट्स हुज मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस गेट रिकॉर्डेड अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम, उसमें क्या आता है, इसके ऑप्शंस जो है गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, all of the above. Option D is the correct answer. Next question, that is the components of a balance of payment account are, we know there are two components of balance of payment, one is current account and another is capital account. That means option C, both A and B, is the correct answer. Next question, the balance of payment account records the inflow of foreign exchange on the, जो भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड अंडर द डैश ऑफ द डैश अकाउंट. जो इंपोर्ट हम मशीनरी करते हैं फॉर एग्जाम्पल से फ्रॉम चाइना और USA, उसके लिए उसमें क्या होगा, outflow of foreign exchange. We have to pay for the import of machinery, that will be included on the debt side but will be included in the current account. Next question, that is gifts or grants received from outside the country get recorded under the dash of the dash account. उसमें क्या होगा, जो भी फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स और ग्रांट्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में किसी फॉरेन कंट्री से आ जाते हैं, दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और जो इसके ऑप्शन है प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, ऑल द थ्री आर द parts of capital account.
Therefore, all of the above, option D is the correct answer. Next question, that is the current account of the balance of payment includes transactions like, हम जानते हैं कि जो current account है that deals with the payment for currently produced goods and services, interest earned or paid, and also gifts and donations. Simply we can say it is related to the flow of income. Therefore we can say all of the above, option D is the correct answer. Next question, that is inflow, an increase in the foreign exchange reserves gets recorded on the dash of the balance of पेमेंट अकाउंट. मैंने पहले ही कहा कि जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है वो that is recorded on the credit side and the outflow of foreign exchange is recorded on the debt side. That means option B, credit side, is the correct answer. Next question is, consider the following statements and identify the right ones. इसके जो यहाँ पे जो दो statements दिए गए हैं Next question is, consider the following statements and identify the right ones. सबसे पहला statement जो है, a double entry system of record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world is called balance of trade. Next statement, that is all transactions related to goods, services or income are classified as कैपिटल अकाउंट. हम जानते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है एंड विच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, नॉट बैलेंस ऑफ ट्रेड. दैट मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज नॉट correct. Next statement, that is all transactions related to goods, services or income are classified as capital account, but the transactions related to goods, services or income are classified in capital account. That means जो second statement है that is also not correct. That means none, option D is the correct answer. उसके बाद next question, that is the capital account of the balance of payment includes transactions like, and the options are change in foreign exchange reserves, investment in and investments to and from abroad. Next, borrowings and lendings to and from abroad. हम जानते हैं कि all these transactions are included in the capital account. Therefore, option D, all of the above, is the correct answer. Next question, the current account deficit is unfavorable for a country because it signifies. हम जानते हैं कि जब हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है दैट मीन्स कि हमने एक्सपोर्ट कम किया है एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स. दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हुआ है as compared to the inflow of foreign exchange. So that simply means option C, the government does not have sufficient foreign exchange to finance its for international payments. Next question, that is the investment in productive assets and participation in management as stakeholders in business enterprises is, उसको हम FDI, that means foreign direct investment कहते हैं. Therefore option A is the correct answer. Next question, the portfolio investment by foreign institutional investors is called, उसको हम FII कहते हैं, यानी कि foreign institutional investment. Next question, that is a business organization located within India gets a loan from a foreign based company. This transaction is recorded in the dash of dash account within the balance of payment account of India. हम जानते हैं कि अगर हमारी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लोकेटेड विद इन इंडिया, तो अगर उसमें वो किसी फॉरेन कंपनी से लोन अवेल करती है दैट मीन्स देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ payment. Therefore option D, that means credit side and capital account is the correct answer. Next question, that is a business organization located within India
invests in a foreign based company, this transaction is recorded in the dash of dash account within the balance of payment account of India. अगर इंडिया की कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दैट मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ऑप्शन सी इज द correct answer. Next question, foreign exchange transactions that are independent of other activities in the balance of payment account or dash transactions, उनको हम autonomous transactions कहते हैं. That means option D is the correct answer. Next question, that is foreign exchange transactions which are dependent on other activities in the balance of payment account or dash transactions, उनको हम accommodating transactions. That means option C is the correct answer. Next question, that is when payment of foreign exchange are more than receipts then the balance of payment is, तो वहाँ पे क्या होगा, डेफिसिट होगा. दैट मीन्स कि हमने जितना इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जितना हुआ है उससे कहीं ज़्यादा हमारा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ है. दैट मीन्स ऑप्शन बी डेफिसिट इज द correct answer. Next question, the measures taken to improve the negative balance of payment include exchange control, currency devaluation, import substitution, all of the above. Option D is the correct answer. Next question, that is if the trade deficit is rupees 1000 crores and the import of goods is rupees 2000 crores then the export of goods will be rupees. हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, the balance of trade is equal to x minus m, that is the value of exports minus value of imports. अगर यहाँ पे हमने import of goods is rupees 2000, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है that is equal to 1000, that means 1000 is equal to dash dash minus 2000, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 will be its value. Therefore option B is the correct answer. Option B 1000 crores is the correct answer. Next question, that is the balance of payment is calculated because option C balance of payment statements help the government to decide on the fiscal and trade policies is the correct answer. Next question, that is current account convertibility is, it is the freedom of convertibility of domestic currency into foreign currency and vice versa for trade in goods and invisibles. Next question, that is capital account convertibility is related to, it is freedom to invest in financial assets of other countries. That means option A is the correct answer. Next question, which of the statements is right? India has both current and capital account convertibility. In India, there is current account convertibility since the independence. In India, capital account was made convertible since 2007. India has partial convertibility. Option D, India has partial convertibility is the correct answer. Next question, that is foreign currency means, foreign currency simply means any currency other than the domestic currency. Option C is the correct answer. Next question, exchange rate for currencies is determined by supply and demand in system of, हम जानते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रहता है उसमें जो है द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसीज इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी अथॉरिटी एंड in the flexible exchange rate the exchange rate for currencies is determined by supply and demand. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी flexible is the correct answer. Next question, if GNP of India rises it will encourage, उससे क्या होगा, exports भी encourage होंगे, imports भी encourage होंगे. That means both. Option C is the correct answer. Next question, if Japanese import more goods from India other things remain same. मान लीजिए कि जापान ने यहाँ से import किया है इंडिया से more imports as compared to the exports, उससे क्या होगा कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा और जापान बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है दैट विल डिटेरियोरेट. तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन मीन्स. हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन मीन्स सिंपली द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ currency
अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ऑप्शन बी, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ ए फॉरेन करेंसी इन ए मार्केट ड्राइवन सिचुएशन, क्योंकि मार्केट ड्राइवन सिचुएशन इज आल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द स्पॉट एक्सचेंज रेट, इसको हम क्या कहते हैं कि इज द रेट टुडे फॉर एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर another for immediate delivery. Next question that is the forward exchange rate, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द रेट टुडे फॉर एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हार्ड करेंसी हम किसको कहते हैं? इट इज द करेंसी in which the greatest number of transactions take place in the world. For example, today we can say US dollar or euros are the hard currencies. Next question that is when government starts repurchasing the bonds before their maturities, the money which flows into the economy is known as, usko hum cheap money कहते, cheap currency. That is option C is the correct answer. Next question that is interest rates have no influence on the value of country's currency. Next that is have impact on the attractiveness of the economy in the eyes of investors. It is possible that high interest rates can be lead to depreciation of currency. All of the above. मान लीजिए अगर हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उससे क्या है कि दैट विल अट्रैक्ट लेस इन्वेस्टर्स, एंड if the rate of interest has decreased in the economy, that will attract more investors to the economy. That means option B have impact on the attractiveness of the economy in the eyes of investors is the correct answer. Next question that is foreign exchange rates in India are determined by market forces of demand and supply. Option D is the correct answer. Next question India's foreign exchange rate is, that means कि जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है दैट इज वो किस टाइप का है? फ्री फ्लोट, मैनेज्ड फ्लोट, फिक्स्ड टारगेट ऑफ बैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैनेज्ड फ्लोट। ऑप्शन बी इज द correct answer. Managed float exchange, it is simply we can say is a system where currencies fluctuate daily, but the regulatory authorities like government or central bank may step it into control and stabilize the value of currency. That means कि अगर इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक मॉनेटरी अथॉरिटी है दे मे सिट अप इनटू कंट्रोल एंड स्टेबलाइज इट इज वैल्यू, दैट इज नोन एज मैनेज्ड फ्लोट। और ये जो इंडिया ने मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम जो है अडॉप्टेड इन द ईयर 1994, उससे पहले क्या है? उससे पहले यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the foreign exchange market the dash of one country is traded for the dash of another country. हम जानते हैं कि where the currencies of one country and the currency of another country are traded, उसको हम क्या कहते हैं? foreign exchange market. Therefore option A currency is the correct answer. Next question, the price at which a market maker is prepared to buy a currency or borrow money is termed as, उसको हम bid rate कहते हैं. Next question that is exchange rate under flexible exchange system is determined by forces of demand and supply of foreign exchange. Option C is the correct answer. Next question, with a fixed exchange rate, if a country decreases the value of its currency in terms of foreign currency, it is called, that is known as devaluation. मतलब अगर एक कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो उसकी करेंसी में अगर उसकी वैल्यू करेंसी के वैल्यू में अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम डिवेल्युएशन कहते हैं, लेकिन अगर उसकी करेंसी के वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसको हम वहां पे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इफ द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज कॉल्ड,
जब एक कंट्री में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है तो अगर उसके करेंसी के वैल्यू में डिक्रीज होता है तो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर उस टाइम उसकी करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा। आने वाले दिनों में हम कुछ और टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। टिल देन, टेक केयर।